Welcome, everyone. So today we have June 13, 1914, Mother's Prayer with us. Yeah, let's see what can we maybe take away home for all of us. Yeah, so if anyone would like to read just a prayer right now, yeah, Okay, I will. yes, First of all, knowledge must be conquered. That is, one must learn to know thee, to be united with thee. And all means are good and may be used to attain this goal. But it would be a great mistake to believe that all is done when this goal is attained. All is done in principle. The victory is gained in theory. And those whose motive is only an egoistic aspiration for their own salvation may feel satisfied and live only in and for this communion, without caring at all for thy manifestation. But those whom thou hast appointed as thy representatives upon earth cannot rest content with the result so obtained. To know thee first and before all else, yes, but once thy knowledge is acquired, there remains all the work of thy manifestation. And then there intervene the quality, force, complexity, and perfection of this manifestation. Very often, those who have known thee, dazzled and rapt in ecstasy by this knowledge, have been content to see thee for themselves and express thee somehow or other in their outermost being. He who wants to be perfect in thy manifestation cannot be satisfied with that. He must manifest thee on all the planes, in all the states of being, and thus turn the knowledge that he has acquired to the best account for the whole universe. Before the immensity of this program, the entire being exults and sings a hymn of gladness to thee. All nature in full conscious activity, all vibrant with thy sovereign forces, responds to their inspiration and wants to be illumined and transfigured by them. Thou art the master of the world, the sole reality. yeah, thank you. Any thoughts? Anyone? Is this similar to what you see people do? Like I'm doing my daily puja, I'm going for satsangs, I go for discourses, and so I'm spiritual, I'm good, I'm a godly person. Is this what it is saying?
I think a little even more than that, because this is talking about a true union, and mother says even that is not enough. So just say, like, we may be following our own rituals that may correspond in this direction, but even when she says, even when there is a true realization, this task is not just individual salvation कि मेरा हो गया अब बाकी तड़पते हैं तो तड़पते रहें वो this is not about that. और अगर एक भी जना कहते हैं मास्टर्स हैव सेड एंड मदर श्री अरविंदो आल्सो दैट अगर एक भी जना बचा है तड़पता हुआ तो आप नहीं यू कांट breathe normally. Why? Because there is an interconnectedness, and at that level you suffer if other is suffering. Not in that sense we create our own misery, but you won't be at ease if others are not at ease. So you feel that it is my responsibility. Mera, your union maybe in relative degrees it may be growing, but that is not the idea behind integral yoga. कि मेरा हो गया, that's it. अब बाकी जहाँ पड़े हैं वो अपना जाने, टीचर से निकले यहाँ निकले इस जन्म में निकले अगले जन्म में निकले वो मेरे को लेना देना नहीं है. So that is not what it is about. And even in the worldly affairs, again, Mother Shri Aurobindo's yoga, in the worldly affairs, we have to make that change, which we have glimpsed in the heights. नहीं तो एक बड़ा सा गल्फ रहता है कि हमको मेडिटेशन में बड़े मजे आ रहे हैं और we may have actually true glimpses of and also a little bit of stability of that union. But if we withdraw from the world and stabilize that union only, that mother says that is not the purpose for it. So जो आप कह रहे हो that may be going in the same direction, but this is even mother says that even if you are united, उसके लिए आप कोई भी methods and tools and practices use कर लो unification के लिए, उसमें कोई problem नहीं है. She says all means are good and may be used to attain. अब पहली बात तो यही इतना बड़ा task है. This union that mother talks of, it's not like a simple task. And then mother says even that, but it would be a great mistake to believe that all is done when this goal is attained. So you may have gained stability in that consciousness, and mother says that it is great mistake that mera ho gaya. Again, then we have to put forth ourselves in action in the world and affairs in the right work. And there, mother says, then from theory to practical, we have to see where are the gaps, where are the loops and loopholes, and begin to work on that. So first of all, again, we have to see that we can't jump. We have to also ये नहीं कि अच्छा मदर ने बोला था कि अपने आप को झोंक डालो तो पहले झोंक दिया है ना. पहले ये नहीं देखा कि पहले क्या बोला था. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले क्या करना है ना. तो वो भी तो देखना है ना कि मदर ने पहले क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेप क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल knowledge must be conquered. That is, one must learn to know thee, to be united with thee. So at will, like click of a finger, and you have that state of consciousness in which you feel unified. ये नहीं कि टाइम लग रहा है, अरे जरा आधा घंटा देना, जरा थोड़ा स्टेबिलिटी कर ले. So that comes by practice. Just like we are practiced to in loop think about our storylines and मेरे साथ क्या हुआ, just like that we have to practice so that this stability becomes like click of a finger and it's here. उसके लिए हमको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, which initially पड़ेगी, initially as any muscle that we make stronger. So first of all, knowledge must be conquered. That is, one must learn to know thee, to be united with thee, with the true consciousness, to be united with not the ego consciousness, but the true consciousness. And
All means are good and may be used to attain this goal. Infinite practices, all are valid. Whatever suits you, pick up. When you feel, okay, time up, pick another one, whatever. That's no problem. But it would be a great mistake to believe that all is done when this goal is attained. All is done in principle. The victory is gained in theory. And those whose motive is only an egoistic aspiration for their own salvation may feel satisfied and live only in and for this communion without caring at all for thy manifestation. Some of us may think that नहीं लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए जिसको ट्रू रियलाइजेशन हुआ है उसको तो काम करना चाहिए वो कैसे ऐसे लेकिन ऐसा होता नहीं है. We have many examples in past where you can get stationed in between in one of these stages which are really very blissful, peaceful, silent. Everything is there, but live in seclusion and be very peaceful there. But mother says that it's an egoistic aspiration कि मेरा हो जाए, मैं तर जाऊं, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए. अभी भी egoistic. So it's very interesting to see this that even when it is a realization, it can be an egoistic. ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कबीर जी में भी बार बार आती है कि जब तक आप जिंदा हो चाहे कितनी भी रियलाइजेशन है ईगो कैन जंप एंड क्लेम एनीथिंग. But initially I believe that we have to actually take care of us like a sapling is taken care of, like putting a fence around it, for a long time, and only we would know when that long time ends, when we have to now jhonko ourselves in the where even earlier I would not dare to go, but now I am capable enough to go. Who would know? I would know. If you are learning swimming or anything, who would tell you that, okay, now it feels like, okay, thoda sa dar hai, but I'm ready to dive in. We get to know a feeling. Or the coach would know. He would say कि तुझे डर तो लग रहा है, but जा, काम कर. So either a guru would know or our inside guidance would know. So I'm still trying to understand. So are you saying something on a very small scale? If I have to give an example, like when I'm speaking to my sister on the phone, for example, she's still stuck in so many blocks, and still she has the anxieties, fears, stresses of life, which is really something that she can so easily overcome. So if I don't tell her the right path, if I know the right path, and if I don't tell her, the same anxiety and fears and discussions the whole family has. So she'll tell it to my mom will stress, she tells it to me, I stress. So it becomes a vicious loop. So is this on a very small microscopic level that, how if somebody has found the right path, if you tell it to a couple people, then that particular thing is solved within the family. On a more larger scale, when you mention that we are all interconnected, then it is about the whole human race in that case, I guess. Because if, even at a national level or international level, if each one of us is evolved and the humans all over get evolved, then all these issues of war and global issues get resolved. Is that what we are looking at? Yeah, globally, yes, but individually, I would say no. Because पहला step है first unification with the divine consciousness, unification with the true consciousness. हमारा अभी वो नहीं हुआ है. हमको लगता है पढ़ पढ़ के कि हमारा हो गया. ये चक्कर है. पढ़ पढ़ के ख्याल आ जाते हैं. हेलुसिनेशंस भी तो होती है ना, और पढ़ने से क्योंकि बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स दैट वी आर रीडिंग, तो ऐसा लगता है हो गया. अब जैसे इमेजिन करो कि मैं जसुन्मा को सुनूं अबाउट टेमिंग द मंकी माइंड, है ना, और एक ही वीडियो में 5 बार सुन लूं, तो आपको क्या लगता है मेरा माइंड मंकी माइंड टेम हो गया? लेकिन मेरे को फीलिंग आ जाएगी. मेरे को फीलिंग क्या आएगी, देखो मेरा हो रहा है, मेरी बहन का नहीं हो रहा. हद है. कब तक रहेगी गोल 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 चक्कर में.
तो ये बहुत बड़ा डिल्यूजन है विच एक्चुअली हैपेंस विद अस, वेयर प्रैक्टिकली वी हैव नॉट रियलाइज्ड, but because we are reading and immersing in those books and literature, that's what mother calls a spiritual ego, which develops by effect of it. It's like nothing special with me or you. The whole human race is perplexed by it. It develops, but then it can be let go of also, because we are wary of it and we are vigilant, that it can develop. So I have to see that क्या मेरा realization true है. कौन बताएगा ये? आपके अलावा तो कोई नहीं बताएगा ना. अगर आप 4 मिनट के लिए बैठते हो to keep the mind on the breath, for example, or to take the stance of witness consciousness, क्या 4 मिनट फुल आप विटनेस कॉन्शियस होते हो, या अप डाउन पेंडुलम की तरह हो रहे होते? ये कौन बताएगा? आप ही तो बताओगे ना. तो वो रियलाइजेशन हमारा ट्रू नहीं है. अभी हमने पढ़ लिया है, हमको झरोखा मिल गया है, बट हमें लगता है कि मेरा हो गया, बट अभी हमारा हुआ नहीं. लेकिन मदर कह रही है पहले होना चाहिए. तो हमको पहले करना है, और उसी के लिए मैं कह रही थी, उसके लिए सेंस बिठानी होती है, उसके लिए सारी थॉट्स एंड आइडियाज एंड जजमेंट को साइड पे करना होता है. पुश aside, lower nature must be pushed aside. So the image I have about my sister, that she is following a wrong path and maybe I can tell her the right path, it's just an image of my mind. Can't hear It is you. no, Yeah. है ना, it's no reality that I'm seeing. So I become aware of my own limited windows, that जो मैं देख रही हूँ, क्या पता उसके लिए कुछ larger plan है, I don't know, but let me focus on that which I have to do. अभी पहले वो तो पक्का करूँ मैं, मेरा वो पक्का नहीं है. तो कैसे मैं हिलती हूँ, छोटी छोटी बातों पे हिल जाती हूँ. So that union has to be stabilized, which I believe it that itself is a very long journey. ये बोलना कि मेरा हो गया और बाकियों को मैं सही पथ पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक बस इट्स जस्ट लाइक एन इमेज इन माय माइंड. इट्स नथिंग मोर, जस्ट एम्प्टी बबल. ट्रू कॉन्शियसनेस को हम ऐसे दूर भगाते हैं और ऐसे इंटेंड करते हैं कि मुझे चाहिए. जैसे आप इमेजिन करो, आप पार्क में बैठे हो एक बेंच पे, और उस बेंच पे सिर्फ एक जगह है, और कोई फ्रेंड है सामने से आपका जा रहा है, आप उसको बुला रहे हो इशारे से, आजा. वो देख रहा है कि लेफ्ट राइट, आप इशारा तो कर रहे हो उसको बैठने के, लेकिन जगह नहीं है अभी उसके लिए आपके पास, है ना. आप इशारा कर रहे हो आजा, बैठते हैं. वो हैरान हो रहा है कि भाई बैठूं तो तेरे सर पे बैठूं, कहाँ बैठूं, मतलब जगह तो है नहीं. या तो तू खिसक, थोड़ा सा जगह बना, है ना. बट आप बुला रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है? आजा. बट अभी क्या है, द लोअर नेचर इज टेकिंग टू लार्जर रूम. तो हमारे साथ बहुत ज्यादा समय तक ये थोड़ा मूवमेंट रहता है. हमको लगता है दैट हम चाहते हैं, बट एक्चुअली में वो पुराना छोड़ना नहीं चाहते. और जब तक पुराना छूटेगा नहीं, वो नया ढूंढ रहा है जगह. वो तो कह रहा है मुझे, हाँ मैं तैयार हूँ आने के लिए, जगह तो देख, खिसक तो सही, है ना. चल तू बैठी रहे, तू थोड़ी जगह तो बना दे, है ना? थोड़ा सा ऐप तो साइड पे कर ले, थोड़ी सी तो जगह बना दे. हम वो भी नहीं करते और हमको लगता है हम बुला रहे हैं. So we have to make room. So we have to make room for the true consciousness, and for some time it has to remain empty. कि कोई ना आए, ये चलेगा, है ना. लेकिन फालतू मैं नहीं आने दूंगी, क्योंकि अगर फालतू बैठ गया इस जगह पे जो मैंने बना के रखी है, तो फिर ट्रू को मैं कहाँ बिठाऊंगी. तो थोड़े टाइम के लिए वो एम्प्टीनेस मुझे बिल्कुल मंजूर है, दैट प्रेग्नेंट एम्प्टीनेस जिसकी हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे. लेकिन उसकी जगह गार्बेज नहीं बिठाऊंगी, क्योंकि गार्बेज बिठाऊंगी तो फिर मैं ट्रू को कैसे बुलाऊंगी. इसको एक लवर और बिलवर्ड का रिश्ता कहते हैं, कि आप पूरे जन्मांतर आप खाली बैठने के लिए तैयार हो, बट आपने एक को चुन लिया, तो बस अब आप उसके अलावा किसी और को नहीं बिठा सकते अपने दिल में. लवर एंड बिलवर्ड. इसको पात्रता भी कह सकते हैं, है ना, कि यू आर बिकमिंग मोर अ पात्र फॉर ट्रू कॉन्शियसनेस, बिकॉज यू आर नॉट just entertaining yourself with left and right and up and down.
यू आर रेडी टू वेट फॉर दैट. लेट मी बी एम्प्टी, बट मिलना है तो उसी से मिलना है. इसे कहते हैं प्यार. सुना तो होगा आपने. Yeah. Yeah, so just wanted to stress that there is a lot of work which is yet undone, which we have to do within ourselves regarding the first few lines of the mother. Yeah, anything more here? Think here where it says that for those whose motive is only an egoistic aspiration, right? That bas mera ho jaye. Like, for, I mean, one very practical thing that helped me understand was like we've heard it a lot of time, right? कि खाली तुम्हारे होने से नहीं होगा, which is a bit difficult for the reasoning mind to understand. जब मेरा हो ही जाएगा तो मेरे होने से क्यों नहीं होगा, right? ना? So when we talk about corona, for example, right? To say you are cured, and yet there are people who have it. So you can never say कि okay, I don't have the risk, right, of getting down again. So even if there is say a single case reported और है कहीं पे भी तो वो जा नहीं सकता, for example, right? So unless we are all healthy, unless we have all conquered, it is not possible that it would go. I mean, just talking practically, I mean, of course, there are possibilities, but factually, to use this example, that helps me that, okay, that thing is there, कि फिर गिर सकते हैं, फिर गिर सकते हैं, फिर it can come and conquer our physical. So when we help each other and when we care, कि नहीं, we all must rise and we all must make ourselves say free of this, then as a, I would say, a race, right? We have conquered something, or we have, yeah. Yeah. तो मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है कि मैनिफेस्टेशन भी जरूरी है. नॉट ओनली जस्ट इनर कम्युनियन बट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन. But those whom thou hast appointed as thy representatives upon earth cannot rest content with the result so obtained. खुजली मची रहेगी आपको कि अभी काम पूरा नहीं हुआ. टू नो दी फर्स्ट. अब अगेन हमको ये इस पे स्ट्रेस देना है. हमको सिर्फ उस काम पे नहीं जाना है जो मदर बता रही है कि मैनिफेस्टेशन, इस पे भी स्ट्रेस देना है हमको. टू नो दी फर्स्ट and before all else. Yes, which is number one. But once thy knowledge is acquired, there remains all the work of thy manifestation. तो आप किताबों की बात ले लीजिए. जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, टॉक सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम काफी टाइम हम चिपक भी जाते हैं इन चीजों से कि ओ हु एम आई एम द वन हु लिसन्स टू ऑल दीज टॉक्स. हु एम आई एम द वन हु रीड्स ऑल दीज बुक्स. तो उसपे क्या होता है कि देयर कम्स अ पॉइंट कि अब आपको एक्चुअली में बुक्स पढ़ने की नहीं जरूरत. बुक्स पढ़ते पढ़ते, टॉक सुनते सुनते, अपने ऊपर काम करते करते, देयर इज अ लेवल, relative degree of realization that you have attained. It happens with everyone. Now it is important to put it into action. अब कितना पढ़ोगे, है ना? तो जब हम एक्शन में, इंटरैक्शन में लेके आते हैं, चाहे अब हम नहीं पढ़ रहे ज्यादा, तो अब हमें अपनी वो भी पता लगती है कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ पे काम अभी बचा हुआ है, जो लगता था हो गया बट हुआ नहीं. तो टू नो दी फर्स्ट एंड बिफोर ऑल एल्स. यस,
But once thy knowledge is acquired, there remains all the work of thy manifestation. And then there intervenes the quality, force, complexity, and perfection of this manifestation. कि भाई क्वालिटी कैसी है, हल्का सा ग्लिम्स आता है, चला जाता है, या फिर वो स्टेबल रहती है, जो ब्यूटी और हार्मनी आपके वर्क्स में कभी कभी आती है, मोस्टली नहीं आती है ना. तो क्वालिटी, फोर्स, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स ये नहीं कि सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट, वेरियस लेवल्स वन इज एबल टू वर्क आउट दैट परफेक्शन. अब ये तब पता लगेगा इसका मोर क्लियरली व्हेन विल इट हैपन, दैट व्हेन वी बिगिन टू वर्क, फिजिकल वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, जस्ट ऑनलाइन सेशंस की बात नहीं हो रही, बिकॉज ऑनलाइन सेशंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस. बट जब हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं वर्क्स में, एट अवर होम, एट वर्क प्लेसेस, ऑन द रोड, स्टैंडिंग इन अ क्यू, वहां पे हाउ मच वन इज एबल टू work through beauty, harmony, and attention to detail, push oneself forward. वहां पे कितना हो पा रहा है. तो quality, force, complexity, and perfection of this manifestation. Very often, those who have known thee, dazzled and wrapped in ecstasy by this knowledge, have been content to see thee for themselves and express thee somehow or other in their outermost being. तो काफी बार ऐसा होता है कि इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल थिंग दैट यू एक्सपीरियंस एंड यू जस्ट, बड़ा आपको ठंड पड़ गई, जैसे आपको लग रहा है वाह बढ़िया, अब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. होता है, सबके साथ होता है, बस और कुछ नहीं चाहिए, आई एम सो रिलैक्स. बट देन मदर सेज दिस इज नॉट एनफ. कि आपके आउटर मोस्ट बीइंग में उसका एक्सप्रेशन आ गया, बस उस लेवल तक आ गया, बट दैट इज नॉट एनफ, दैट यू हैव बिकम ब्यूटीफुल और यू आर फुल ऑफ रेडियंस. आउटर मोस्ट बीइंग में भी आ गया उसके इफेक्ट. Have been content to see thee for themselves and express thee somehow or other in their outermost being. यहाँ तक भी हुआ. He who wants to be perfect in thy manifestation cannot be satisfied with that. He must manifest thee on all the planes, in all the states of being, and thus turn the knowledge he has acquired to the best account for the whole universe. So planes of being and states of being, on all the planes and all the states of being. So states of being, our states of being are always changing, है ना. तो उन सारे लेवल पे किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो ड्रीम कॉन्शियसनेस है, चाहे वो स्लीप कॉन्शियसनेस है, कोई भी जो लेवल चल रहा है ना, रेस्ट ले रहे हो, कुछ कुछ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. प्लस ऑन ऑल द प्लेन, द मेंटल प्लेन, द वाइटल प्लेन, द बॉडीली प्लेन. And not only for yourself, but for the people around you also with whom you work or with whom interaction is there. लेकिन वो ये कि यहाँ पे ये नहीं होगा that you can't force anyone, है ना. यहाँ पे बहुत जरूरी है ये देखना कि जब हमें ये डाउट होता है कि मेरा हो गया, उसके बाद ना काफी बार हम फोर्स भी करते हैं. मतलब फोर्स में प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज नो रिसेप्टिविटी. वेयर देयर इज रिसेप्टिविटी यू कैन मे बी वर्क, बट वेयर देयर इज नो रिसेप्टिविटी, है ना, there it is better to let the person grow through their own experiences because we don't know the larger plan. So without receptivity एक सिर पे दीवार पे सिर मारने वाली बात होती है, और वो नहीं, usually if a person is relatively realized he would not be able to do that. He would also honor the unfolding of the other person's life. हमें नहीं पता कि किसके लिए क्या उचित है.
Before the immensity of this program, the entire being exults and sings a hymn of gladness to thee. मतलब क्या मल्टी लेयर्ड जो डिजाइन बनाया हुआ है तुमने, मतलब उसका वंडर, ओ माय गॉड. So before the immensity of this program, the entire being exults and sings a hymn of gladness to thee. I remember Jyoti Priya, Judith Tyberg, who was renamed Jyoti Priya by the mother. Mother said that your psychic is in front, like it's a alive, conscious psychic being. And now whatever you do, interactions in the worldly life and whatever work you do, the outer difficulties will be a signal of the difficulties that you have to correct within. तो उसकी साइकिक कॉन्शियसनेस अवेक है. अभी तो हमको तो मदर कहती है कि पहले तुम साइकिक को डिग आउट तो करो, है ना. उसकी साइकिक कॉन्शियसनेस से ही वो जी रही है, उसी से वो काम कर रही है. बट वहां पे भी बात खत्म नहीं होती है. वहां पे मदर कह रही है all the outer difficulties that you will encounter through the divine work that you are doing, they are a reflection of what are the things that you have to work on inside. तो कितने लेवल्स पे है ये प्रोग्राम, है ना, कि आपको लग रहा है कि ओ मेरा हो गया, लेट मी वर्क फॉर द मदर. बट अभी आपका भी उसके थ्रू ही होने वाला है. जो वर्क फॉर द मदर आप कर रहे हो ना, उसके थ्रू आपका भी हो रहा है. आपका हो ही नहीं गया. ये नहीं है कि टी पॉइंट आ गया, खत्म, नो लेफ्ट नो राइट. दैट्स व्हाट अनंत की तरफ जो जर्नी है. Before the immensity of this program, the entire being exults and sings a hymn of gladness to thee. Why? Because progress is joy. Whenever we progress, we have joy inside. And whenever we encounter difficulties, challenges in relationships, challenges, कभी कभी बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है कि अच्छा यार मेरे को तो इतना कुछ पता है, बट मेरे फैमिली पे बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं है उसका. फ्रस्ट्रेशन होती है जब हमारे दिमाग में एक ख्याल आते हैं कि मेरे को बड़ा कुछ पता है ना. तो अगेन देयर इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस. देयर विल बी प्रोग्रेस, देयर विल बी थ्रू प्रोग्रेस देयर विल बी जॉय. क्या है चीज जो अटकी हुई है? All nature in full conscious activity, all vibrant with thy sovereign forces, responds to their inspiration and wants to be illumined and transfigured by them. So now Mother sees, even in so-called not that conscious beings and creatures around us, Mother sees that as if I see that everyone is wanting to be illumined and uplifted. All nature in full conscious activity, and also each part of our being is also part of nature, not separate. ये हमारी बड़ी वो होती है कि हम एनिमल्स और प्लांट्स को तो नेचर बोल देते हैं और हम अपने आप को एक इंसान बोल के अलग कर देते हैं. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट नेचर which wants to be uplifted. All nature in full conscious activity, all vibrant with thy sovereign forces, responds to their inspiration and wants to be illuminated. ये जो रिस्पॉन्ड की मदर बात कर रही है, ये आधे टाइम तक तो हमारा वो रिस्पॉन्ड ही नहीं होता है कि बार बार वो दरवाजे पे नॉक 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 हो रहा है. यहाँ पे कोई खोलने वाला ही नहीं बैठा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा. अरे जाओ ना बाबा, आगे जाओ. दैट इज हाउ वी सेंड अवे द ट्रू कॉन्शियसनेस. कोई वैल्यू नहीं है हमको. There comes a line in Savitri, which maybe I can share later, where it is exactly this, that how a treasure is wasted, unattended. But यहाँ पे response आ गया. So responds to their inspiration and wants to be illumined. Now, no part of me is defending the darkness. To mother, I was sharing with Taru, mother says, to be young, you have to let go of who you are so that you can become who you must be. जो अभी हम छोड़ ही नहीं पा रहे जो अभी हम हैं,
तो कैसे वो बनेंगे जो हम मस्ट भी है, जो हमारा बर्थ राइट है? Thou art the master of the world, the sole reality. Only you are the reality. जो हमको बाकी चीजें concrete reality दिखती हैं, it's a question that we can ask. What is real, what is not real? तो जिसको हम रियल बनाते हैं उसके हिसाब से हमारी जो लाइफ है वो क्वालिटी लेती है। अगर हम इसको सोल रियलिटी बनाते हैं तो उसके हिसाब से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होती है, वेरी टेंजिबल। और अगर हम उन चीजों को रियल बनाते हैं जो एक्चुअली में दे आर एफिमेरल, दे आर नॉट रियल, है ना, उनको कॉन्क्रीट बनाते हैं, तो फिर हमारी लाइफ भी उसी तरह परेशान रहती है। Yeah, if there are any comments, any reflections here, we can take. So please share if there is anything. Just a question, like, we come across so many gurus and spiritual people. How do you really identify people with divine consciousness? So are these um, people who don't get angry quickly, or are there any other ways of finding that out? Like, Very who is interesting question. who's really, like, attained a certain higher level? एक्चुअली मैंने सुना है ऐसा, पता तो ज्यादा नहीं है मतलब, बट सुना है कि जो जिनको रियलाइज, पीपल हु एक्चुअली गेट ट्रूली रियलाइज, दे लाइक दे आर वेरी ऑर्डिनरी। तो जो हम गेज करना चाह रहे हैं ना, कि मैं गेज कर लूं, कि मुझे पता लग जाए कौन रियलाइज है, वो एक्चुअली वो दे मे नॉट, वो आपको नहीं दिखेगा, ये चक्कर है। कभी कभी दिख भी जाएगा, मैं ये नहीं कह रही, बट ऐसा होता है कि मतलब दे आर सो ऑर्डिनरी, बिकॉज पीपल हु आर ट्रूली ट्रूली रियलाइज, इट सीम्स दैट it doesn't matter what their realizations are, because they know that अभी तो बहुत आगे और पड़ा हुआ है, तो मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। so they are actually very ordinary। और जहां पे आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये देखो ये एक बीइंग जा रहा है, तो वहां पे एज इफ द ईगो हैज क्लेम वट एवर लिटिल रियलाइजेशन, वो जो हम कल बात कर रहे थे कि कोई भी रियलाइजेशन ले लो और उसमें एक ड्रॉप मैं की डाल दो, बस काम तमाम, है ना। एंड सो आई वुड से सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ, simple life, unburdened life, lightness in life, very ordinary. So it would be for us, people who are always looking for signs and signatures, it would be very difficult actually। हमको तो लगेगा कि यार ये तो रियलाइज हो ही नहीं सकता, ये तो गुस्सा कर रहा है। भाई आपको क्या पता उसका गुस्सा कि कहाँ से आ रहा है, किसकी चीज के लिए वैलिड है ना। तो हमारे लिए गेज कर पाना, मतलब ऐसा लगता है कि भाई उस बुद्धि को उठा के साइड पे रख दो कि मैं तो गेज ना कर पाऊंगा, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे गेज। बट ये है कि ऑन द अदर हैंड it also seems that a part of us can gauge what Dalai Lama ji says, that if you have to choose your guru, gauge, and for take 10 years, 12 years, and keep gauging. If you find him worthy, then you choose him as your master. है ना? But he's not saying 1 day, 2 days, he's saying 10 years, 12 years. इतना रुकोगे गेज करने के लिए? और मतलब इट्स वेरी, मतलब ये काफी ट्रिकी डोमेन है, क्योंकि काफी बार गुरु ऐसी चीजें बोलता है। अब जैसे मदर है, जो पीपल हु न्यू मदर इज द डिवाइन मदर, दे आर जस्ट फेथ, जस्ट ब्लाइंड फेथ, वन कैन से, दे जस्ट न्यू फ्रॉम देयर हार्ट दैट शी इज द डिवाइन मदर। नाउ व्हाट एवर शी हैज टू से, आई हैव टू डू। अगर वो बोल रही है पेपर फैक्ट्री में जाना है, तो चाहे मेरी इंक्लिनेशन है कि नहीं पेपर फैक्ट्री में काम करने की, मुझे करना है। वाई? बिकॉज मदर नोज द बेस्ट। अब कोई दूसरा बंदा जो दिमाग से चल रहा है, ये तो डिवाइन मदर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी तो इंक्लिनेशन ही नहीं है, मेरे को तो पसंद ही नहीं है पेपर फैक्ट्री, तो मेरे को ये कैसे भेज सकती है, ये जानती नहीं है मेरे बारे में, है ना। किसी भी तरह का ख्याल आ सकता है तुम्हारे दिमाग में।
तो यही है कि तो हार्ट वाली बातें इसे इसको हमारा जो छोटा सा दिमाग है वो नहीं इंटरप्रेट कर सकता, क्योंकि वो जहाँ फंसा हुआ है वहां पे ट्रुथ नहीं है, जहाँ वो छोटा दिमाग फंसा हुआ है। ओनली हार्ट कैन नो, है ना, these are matters of depth of our heart. So the heart will tell me whether I have to follow this person or not. तभी फेथ को जैसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं ना, इन दैट सेंस इट इज ब्लाइंड बिकॉज द माइंड इट कैन नॉट सी, इन दैट सेंस इट इज ब्लाइंड। ऐसा नहीं है कि फेथ ब्लाइंड है, फेथ नोज, बट क्योंकि हम माइंड के थ्रू हमेशा जानना चाहते हैं कि ओ इज इट मेकिंग सेंस, इट इज मेकिंग सेंस, so in that sense it is not making sense, so you call it blind faith। क्योंकि एक जो खिड़की है हमारे पास देखने के लिए उसमें यस इट इज नॉट मेकिंग सेंस, so blind faith, but I know that this is my place, this is where I have to be। So tricky है question, that's what my sharing is, there may be more things to it, but yeah, yes, I actually, because sometimes these questions come right in all of us. I personally, for me, I find this coming from a lot of ego. कि मैं किसके आगे सर झुकाऊं, बताओ कौन मेरे काबिल है। मतलब नॉट सेइंग इट्स फॉर एवरीवन, बट एंड देन देयर इज अ दत्तात्रेय, राइट, कि मधुमक्खी से मैंने ये सीखा और अजगर से मैंने ये सीखा और मिट्टी से मैंने ये सीखा और हवा से मैंने ये सीखा, राइट। लाइक व्हाई डू आई हैव टू हैव दोज रिजिड मोल्ड्स that okay, let me find the most beautiful lotus and then I'll say that yes, nature is beautiful, right? Nature is beautiful in a fallen leaf, in a fallen flower, in a in a blossoming tree as well as in a dried up tree. But if it's up to me what I want to pick, what I can gain from anything and everything, so I think let's not get fooled also by, kind of this thing that I have to find the one, I have to know the one. I have to know just me. And for that, any help I am getting from anywhere, whatever resonates, whatever expands, whatever, like you were sharing, the heart knows, feels right, feels कि मेरे हित में है, कि चाहे मजा आ रहा है कि नहीं, चाहे कंफर्ट है कि नहीं, कंफर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बट लग रहा है कि ठीक ठीक लग रहा है, मतलब मेरे लिए अच्छा होगा। लॉट ऑफ टाइम्स some things are happening which are very painful for you emotionally, mentally, and yet there is a voice that tells you कि नहीं, ये long run, this is good, this is really good for me. So just paying attention to those subtle things, and just if I am open to learning, growing, progressing, everything I see, everyone I meet, खाली बोलने की बात नहीं है, honestly, teaches me something, shows me something। अगर मैं willing हूँ, अगर मैं तैयार हूँ, तो सब पूरी कायनात सिखा रही है। Yeah, and of course, then there is this approach के yes, you find someone and judge, but I think वो भी एक that's a Zen way, that's a Buddhist way in which पूरी life बस उसी के लिए dedicated है। एंड देन लाइक यू सेड कि अब 10 साल 12 साल देख लिया, मान लिया, उसके बाद तो कम व्हाट में ही सेड आई डू, उसके लिए भी बहुत कैपेबिलिटी चाहिए, है ना, कि अब बस सर झुक गया, अब उठने का चांस ही नहीं, अब ब्रेन रख दिया साइड पे। दैट ऑल्सो ऑब्वियसली इज अप्रोच, एंड दिस टू इज द वे आई थिंक वन कैन। yeah, anything more? Yeah.
So these are the lines which I thought maybe are relevant here, whatever we are discussing. Page 439. The way of fate and the problem of pain. A grisly company of maladies come, licensed lodgers into man's bodily house, purveyors of death and torturers of life. In the malignant hollows of the world, in its subconscious cavern passages, ambushed, they lie waiting for their hour to leap. Surrounding with danger, the sieged city of life, admitted into the citadel of man's days, they mine his force and maim or suddenly kill. So this, what Kabirji shares, that please be vigilant, otherwise people, you know, animals and wild things will come and they will eat up your being from within. And तोहे मार तोरा मांस बिकवे, तो तुम्हें बेच खाएंगे. So all these thoughts that we continue to allow, all these sensory inputs and feelings that we buy so tightly into, they eat up our crop within. All these negative, vicious loops that we are always doubts, even doubt is part of this. Ambushed, they lie waiting their hour to leap. है ना? It's just lurking round the corner, doubt. आपको किसी पे भी डाउट हो गया, वो डाउट आपको सबसे पहले खाएगा, वो उसको परेशान करे ना करे. Confusion in the mind, frustration, annoyance, doubt about future, anxiety, panic, these are all lying ambushed. Ambushed, they lie waiting their hour to leap. Surrounding with danger the sieged city of life. What is the city of life? My being. Admitted into the citadel of man's days, they mine his force and maim or suddenly kill. एकदम से ठप, एकदम से नॉन विजिलेंस हुई और आप कहाँ पहुंचे? आप पहुंच गए वहां जहां आप नहीं पहुंचना चाहते थे. स्लिपरी स्लोप. Ourselves within us, lethal forces nurse. हमारे नर्स जब माँ के लिए यूज किया जाता है, अब मदर इज नर्सिंग द चाइल्ड. आप अपना खून, अपना दूध उसको आप पिला रहे हो. This is what happens when we are nursing these forces, these adverse forces. Jealousy, ambition, doubt, confusion, demands, desires. They are all getting nursed where? Within me. मैं उनको दूध पिला रही हूँ. So, ourselves within us, lethal forces nurse. We make of our own enemies our guests. आइए आइए, ये तो मेरी इंसानियत का प्रतीक है ना? डिजायर, डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस, ये तो हमें इंसान बनाता है. So they are our guests. We don't see them as our enemies. हम यही तो कहते हैं, अरे आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, है ना? There we allow entry. We make of our own enemies our guests. Out of their holes like beasts, they creep and gnaw. दीमक खाती है ना अंदर से, खा 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 खा. The chords of the divine musician's lyre, till frayed and thin, the music dies away, or crashing, snaps with a last tragic note. Vital being, हमारा desiring self, इतना खाता है अंदर से हमको, पूरी जिंदगी ले जाता है, वो पूरी जिंदगी खा जाता है. मैं बेचारी, मैं पूरी जिंदगी खा गया आपकी, आपको बीमार कर दिया उसने, कहीं का नहीं छोड़ा. Very powerful line. See, out of their holes like beasts they creep and gnaw. The chords of the divine musician's lyre, till frayed and thin, the music dies away, or crashing, snaps with a last tragic note. All that we are is like a fort. Same thing comes with Kabirji. You are a palace, you are a fort. All that we are is like a fort beset. All that we strive to be altered like a dream in the grey sleep of matter's ignorance. Mind suffers, lamed by the world's
disharmony, and the unloveliness of human things. इन्हीं चीजों पे तो आधे आधे टाइम हम विचार करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वहां पे अगलीनेस, यहाँ पे अगलीनेस, अनलवलीनेस ऑफ ह्यूमन थिंग्स. Mind suffers lamed by the world's disharmony and the unloveliness of human things. A treasure misspent or cheaply, fruitlessly sold. ऐसे आसानी से हम अपनी पीस बेचते हैं ना. किस किस के नाम पे बेचते हैं? डेली रिलेशंस के नाम पे, है ना, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे. नहीं, ये तो मुझे करना ही है, ये तो मेरा धर्म बनता है, उसके नाम पे. मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? All these waste phone calls that we keep making, to our relatives, which have nothing in them. Kachra, bilkul zero. Why? In the name of roles and responsibilities. A treasure misspent or cheaply, fruitlessly sold in the bazaar of a blind destiny. A gift of priceless value from time's God, lost or mislaid in an uncaring world. Nobody cares about it. Life is a marvel missed, an art gone right. करने क्या आए थे और करने क्या बैठ गए, और जो करने बैठ गए हैं उसको हम डिफेंड करे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि भाई 40 साल तो किया, तो अब ये कैसे मान लूं कि गलत किया. Uncaring world. Kabir ji says the same thing. He says as if it's like your true consciousness, true self is like एक बंदर को आपने हीरा पकड़ा लिया है. अब वो क्या कर रहा है? वो हाथ में पकड़ के देख रहा है, फिर उछाल उछाल के देख रहा है उसका वेट कैसे है, फिर उसको ऐसे मुंह पे लगा लगा के जीप से चाट चाट के देख रहा है. ई न जाने कछु नहीं जाने, नी जाने गुरमाला, कब लग पहरी कब लग तोड़ी, छोड़िया फेंक दी झाड़ा में. तो ये हमारी जो प्रैक्टिस है, इनवर्ड प्रैक्टिस, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज लाइक दैट. कब लग पहरी कब लग छोड़ी, माला ले ली आपने बड़ी सुंदर सी है, जब वैसे बिल्कुल स्पिरिचुअल होने का मन कर रहा है तो कर ली, और कब लग छोड़ी, तोड़िया फेंक दी झाड़ा में. एंड देन ही कंपेयर्स अस विद बंदर, कि बंदर को अगर तुमने हीरा दे दिया तो क्या करेगा? उसको उसको किससे मतलब है? उसको तो बस खाने पीने और छिलका उतार के वो क्या खाता है जो भी, उससे मतलब है. उछाल उछाल के उसको कुछ खाने को दे दो. वो हीरे को भी उछाल उछाल के देख रहा है, चाट चाट के देख रहा है. उसको क्या पता, बंदर को क्या पता वो क्या चीज है. लॉस्ट एंड मिसस्पेंट इन एन अनकेयरिंग वर्ल्ड, फ्रूटलेसली सोल्ड. आपको पता भी नहीं कि आपने क्या बेच दिया. So this is where Narad explains that why we create misery for ourselves. This is all that we do, that we create misery and pain. तो अब ऐसी सिचुएशन में पेन नहीं आएगी तो फिर और क्या आएगी? पेन तो आएगी, क्योंकि सीधी डायरेक्शन तो लेनी है. और मदर कह रही है, at times we feel that, oh, don't take it so seriously. It's a very serious affair. Mother says that you must actually be serious about it, because if you are not serious, you lose a golden opportunity. Something like, I think I took a snapshot. Yeah. So she says, when one enjoys oneself and forgets. अब देखो हम आप ये फर्स्ट लाइन, हम क्या कहते हैं? अरे यार, एंजॉय योर सेल्फ. क्या कर रहा है? इतना सीरियसली क्यों ले रहा है चीजों को? एंजॉय योर सेल्फ, चला चिल आउट कर. और ये क्या कह रही है मदर? when one enjoys oneself and forgets, when one takes things as they come and tries to avoid being serious and looking life in the face, in a world where one seeks to, in a world होना चाहिए, in a world when one seeks to forget that there is a problem to solve, that there is something to find,
that we have a reason for existence and living, that we are not here just to pass our time and go away. है आपने देखा होगा काफी लोग, बड़े लोग स्पेसिफिकली, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, आप पूछो आजकल क्या कर रहे हो, तो कुछ कुछ बताएंगे और फिर बोलेंगे अरे हम क्या करें, टाइम तो पास करना ही है। नो, सो एक्चुअली नो, वी लिव एज इफ कि बस हमें टाइम काटना है, टाइम पास करना है। व्हाट इज मदर सेइंग? वी आर नॉट हियर जस्ट टू पास आवर टाइम एंड गो अवे without having learned or done anything. Then one really wastes one's time, and one misses the opportunity that has been given to us. This, I cannot say unique, but marvelous opportunity for an existence, which is the field of progress, वो आपने लूज कर दी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मुंह बना के बैठे रहे। आई थिंक we must be careful about just making it a formula. But the thing is that to be actually knowing why we are here and to be at work, just that, कि हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं है। जो कबीर जी बोल गए, जो पुराने हमारे मास्टर्स बोल गए, मानुष जन्म अमोल रे तू माटी मेला भूल रे, वो पागल नहीं थे। वो वेद और उपनिषद पागल लोगों ने नहीं लिखे, वो वैदिक ऋषिज ने लिखे। दे हैड हायर नॉलेज, इट वाज टेलिंग अस समथिंग। So we blindly cannot just keep on ignoring and yet allow the lower nature to take all the space on the bench and not allow the true consciousness to manifest. Give time, give hours. अब हम बात करते हैं कि अच्छा मुझे आई वॉन्ट टू यूनाइट विद माई ट्रू कॉन्शियसनेस, आई वॉन्ट टू फाइंड माई साइकिक बीइंग। दिन में कितने घंटे हम इसके बारे में चिंतन मनन करते हैं? कितने टाइम हमारे दिमाग पे ये रहता है? जो हम उस दिन सुमिरन की बात कर रहे थे, सुमिरन की सुध यूं करो जैसे काम ही काम, कि आपके पूरा टाइम दिमाग पे बस वही है और कुछ है ही नहीं। ऑल दैट यू एडिक्शन, जब एडिक्शन होता है ना हमको किसी चीज का, तो हम करते हैं। इट हैज टू बी लाइक दैट, देन इट बिकम्स अ रियलिटी फॉर मी। कि चाहे नींद में भी वही हो रहा है, सोने से पहले भी वही हो रहा है, सो के उठने पे भी वही हो रहा है, उसके अलावा कुछ याद ही नहीं है ना। पूरे दिन क्या इंपॉर्टेंट है, बस वो ना। तब धीरे धीरे थिंग्स ओपन अप। पहले हम ये दिखाए तो सही कि तुम हमारे लिए जरूरी हो। क्योंकि हमारी करनी और उसमें कथनी में बहुत फर्क होता है। कहते हम हैं नहीं मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं क्या करूं, बट वो करनी में नहीं आता हो। तो ये टाइम जो है, हम इसको हम श्रिंक कर सकते हैं। जो कथनी और करनी के बीच का टाइम है, इट इज अ फ्री चॉइस, इट इज इन आवर हैंड्स दैट वी shrink this time, not take too much of time and pestering our own selves also and others around us. तो ढूंढना चाहिए हम सबको बैठ के जो हमारे लिए मोस्ट प्रेशियस है, जिसको अब हम चाहते हैं, we want to unite with. Obedient she sat to the high command, आज्ञाकारी बच्चे। तो सिंसेरिटी होनी चाहिए। सब कुछ उसके सामने सेकेंडरी है। उस चीज के सामने दूध उबल के गिर गया, सेकेंडरी। मेड नहीं आई, सेकेंडरी। बच्चे फेल हो गए क्लास में, वो भी सेकेंडरी, वो भी सेकेंडरी। व्हाट प्राइमरी इज दैट वेयर एम आई विद इन। शादी टूट रही है ना, मतलब सारी चीजें जिनको हम सोशली इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी ज्यादा, है ना। आपकी हालत खराब हो रही है, आप हेल्थ आपकी एट स्टेक है। सोचो, even there you can have a true connection. We have famous story of here in
Sri Aurobindo, disciples, one of the disciples, Nishikanto, you know, he always used to be very unwell, but he was quite a person in himself, a little mad, but kind of a genius. Wrote many poems and improvised and had many visions, but he was always in ill health. And once he was just like on the deathbed, and somehow he was prepared to visit the mother, on a stretcher, I guess. And he held mother's foot, I guess, and I think it was foot. And she said, "Mother, your foot here." That's it. After that, he lived for many, many years, which appeared like his last moment. वेरी इंस्पिरेशनल कि ऐसी हालत में जहाँ पे आपको कुछ होश नहीं है बट उसको इतना होश है कि बस मदर, दैट्स इट. और ये राइट स्पिरिट है, दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस. व्हाट Taru was sharing earlier, this is the right spirit that whatever comes on the way, you have the right attitude. और क्या चाहिए, मतलब बार बार क्या आता है मदर श्री अरविंदो के वर्ड्स में, यू हैव द राइट एटीट्यूड, है ना, शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस विद इन. हम बाहर बंदे ढूंढने लग जाते हैं, अच्छा कौन है जो राइट कॉन्शियसनेस वाला है, वो काम ही नहीं है हमारा, वो डायरेक्शन ही गलत है. व्हाट दे से इज व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स. वही बात है, फिर तो हर जगह ही लर्निंग है आपकी. what you were sharing, that's the right attitude, that whatever comes on the way, I do it with an attitude of inner progress. Mother says never lose an opportunity for progress, and she says to that extent an opportunity lost is like one step closer to death. There. तो फिर तो चांदी ही चांदी है, मतलब हर जगह आप लर्न ही कर रहे हो, चाहे चेलों के साथ लर्न कर रहे हो, चाहे गुरु के साथ लर्न कर रहे हो, चाहे ऑन द वे लर्न कर रहे हो. wherever you are progressive, and progress gives joy. For joy we all yearn. Why did we all get married? For joy. Children, for joy. They promised us something. Everything we do for joy. तो वो joy मिल रहा है आपको. Progress has joy. लेकिन अगर शादी और बच्चों से ही जॉय होता तो जिनकी शादियां हैं और जिनके बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा जॉयस होते, बट उसका उल्टा देखा गया मोस्टली. और तब भी हम इतने ब्लाइंड हैं कि हम और शादियां करते हैं और दिखा दिखा के बड़े बड़े स्केल्स पे, बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे करते, कैसे कर लेते हैं मेरे को ये नहीं समझ में आती. मतलब हाउ कैन वी बी सो ब्लाइंडेड. अगर लॉजिकली हल्का सा भी रैशनल माइंड थोड़ा डेवलप्ड हो कि अगर शादी और बच्चों से ही खुशी मिलती है तो इन सबके मुंह क्यों उतरे हुए, या तो ऊपर से खुश लगते होंगे, मुझे नहीं पता. मेरे को खुद ही याद नहीं है कि मैंने क्यों पूछी. मैं दूसरों के बारे में क्यों बोलूं. Yeah, crux of the matter, let's progress. Yeah. Yeah. So, any last comments, anyone? एक्चुअली मुझे लगता है शादी भी हमारी इसलिए हो जाती है कि इट्स लाइक, मतलब द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन लाइफ इज ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जब हम एक स्टेगनेंसी वाली स्टेज में होते हैं कि समझ नहीं आ रहा यार क्या करें, ठीक ही तो चल रही है लाइफ, चलो शादी कर लेते हैं, तो एक्चुअली में वो एक अंदर से एज इफ यू आर प्लंज्ड इनटू दैट कि अब आएगा मजा, अब होगी ग्रोथ. तो इट्स लाइक दैट, क्योंकि वी आर स्टैग्नेंट,
we become in phases, we become stagnant. And marriage is something which has a great opportunity for progress because you try to find completion outside, which you never get. And that learns, that makes us learn within, or makes us lean back on within rather than on somebody else outside. Thank you. Yeah, so anything last, any last comments? Okay, so maybe we can then end here and take the last moment in silence, sharing, dedicating. All the sentient beings, near, far, may our hearts be full, kind, simple, lots of joy and progress in our life. Thank you.